Vishal? Yes, sir, we can start. So are the participants there? So can we go ahead with it? Yes, sir. There are 3 attendees. Sir, actually, no, sir. We won't be able to see the attendees list actually, sir. So these are Okay. only those people that who are yet to be, these are those who are going to share their story. So Okay. the Okay. attendees list is not with us actually. Only they will be able to see that. How Okay. many you want, Pranta? I don't want anyone. Don't worry. Okay. Anyway, so this is all live recorded. So it will be shared on our image website and it's going to stay eternally there. Yeah. Vishal from River Route. Yes, sir. So how many attendees we have and can we go live? Whenever you want us to go live, you just tell us, we will start. We can start, sir. Also. Are we live? Yes, sir. Oh, you should tell us. Okay. So good evening, everyone. We are in the 3rd week of the March, the Myeloma Awareness Month, and we are doing this 3rd patient group meeting to increase the awareness about myeloma and the various associated conditions. So today we have interesting topics which are going to be discussed by the best of the faculty from the country. So we are going to discuss about infections and the various aspects about the infections. So we have got 3 talks here. First one by Dr. Tapan Saikia. He requires no introduction. And he recently has been awarded with the Assam, the highest civic award from Assam. So sir is going to talk about infections in myeloma. Thereafter, we have Dr. Sumit and Dr. Pranthar. So one of them is going to talk about the vaccinations and the second one about the antimicrobial prophylaxis. To start the proceedings, I would request Tapan sir to kindly give a brief introduction and a detail for the patients about the risk of infections, type of infections in myeloma. Over to Tapan sir, please. Thank you, Dr. Uday. Good evening to everyone. Welcome to this platform, Myeloma Month. And today we'll be talking about infection and other topics related to infections. So I might be using more than one language because it's for eastern part of the country. But let me begin with English. Infections in myeloma can be present at presentation, during treatment, during climate or weather change. For example, during COVID-19, it was very high. Now then influenza season is coming. There's a possibility of being high infections, people with myeloma. And during travel, these are the strong possibilities in myeloma. Why so in myeloma? क्यों होता है myeloma में infection या होने का risk रहती है normal लोगों से ज़्यादा? Myeloma का जो cells है in our body with the plasma cells. Plasma cells are an integral part of our immune system. So अगर immune system में बिगड़ जाए, यहाँ जो B cells का जो हमारा body में protein produce होता है, जिसको हम लोग immunoglobulins बोलते हैं. 5 टाइप के immunoglobulins है. A, G, M कॉमन होता है माइलोमा में. इसके सिवाय भी D and E है. सो इनका जैसे माइलोमा शुरू हो जाता है हमारे शरीर में, वो एबनॉर्मल माइलोमा का प्रोटीन बढ़ते रहते हैं, नॉर्मल घटते रहते हैं. तो जब नॉर्मल घटते जाएंगे इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है. यूजुअली IgM जो है एक्यूट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी घट जाता है. तो मेन रीज़न वो है. दूसरी बात है उम्र. उम्र जितनी बढ़ते जाते हैं हमारा इम्यूनिटी कम होते जाता है. अगर माइलोमा के साथ ज़्यादा उम्र के रहें 65 और 70 और उससे ज़्यादा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है. साथ में बाकी बीमारियां जो हम लोग कोमोर्बिडिटीज बोलते हैं, डायबिटीज स्पेशली रेस्पॉन्सिबल है. एज तो बताया हमने, बाकी आपका किडनी खराब है, लंग्स खराब है, लिवर खराब है, तब भी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. कहाँ कहाँ हो सकता है? व्हिच आर द ऑर्गन्स? कोई भी ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कॉमनेस्ट ऑर्गन होता है हमारा जो श्वास लेने की पूरी नाक से पकड़ के टॉन्सिल्स, थ्रोट, जो लंग्स वगैरह, वो सबसे कॉमन होता है. साइनसेस भी होता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है. इन्फेक्शन कैन बी एनीवेयर, और जहाँ होगा
वहाँ का सिम्टम दिखाई देगा। जैसे लंग्स में हुई तो फीवर हुआ, कफ हुई, पीला कफ निकलना शुरू हो गया है। सो कहीं भी हो सकता है। अब कैसा किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है? अगर इन्फेक्शन हुई डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट जब चल रहा है उसी टाइम पे ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तब भी वेदर चेंज हो गया, तो जितना ही कीटाणु है, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो इन्फेक्शन अगर होता है तो जहाँ होता है वहाँ का निशानी दिखाई देगा, सिम्टम होगा। और वो फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। अगर इम्यून सिस्टम आप काफी जब स्टीरॉइड वगैरह ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट के दौरान, तो इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। कभी कभी वो इन्फेक्शन बहुत सीरियस भी हो सकता है। तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए आपको, फैमिली को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो भी आपको ख्याल रख रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान। वायरस का इन्फेक्शन भी है, जैसे कोविड का बताया, लेकिन एक कॉमन इन्फेक्शन है जिन लोगों को उम्र ज्यादा हो गया, डायबिटीज है, साथ में माइलोमा है, वो हर्पिस जो चिकन पॉक्स का वायरस है, वो नार्व के जो नार्व जैसे चलते हैं, नार्व का जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है नार्व बॉडी का, वहाँ पे हर्पिस का इन्फेक्शन हो सकता है। कई दफे हमने ट्यूबरकुलोसिस भी देखे हैं। सो इसको प्रिवेंट कैसे करें? अगर इन्फेक्शन हो गया, माइलोमा के साथ इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, एक है प्रिवेंशन और एक ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दिया जाता है। कई मेडिसिन जैसे जिनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है उनको लिए एंटीबैक्टीरियल शुरू से ही दिया जाता है, कई महीनों तक चलता है। हर कोई वो प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एंटीवायरल। हर्पिस अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट में रुकावट हो जाता है, उसके लिए कॉमनली दिया जाता है एसाइक्लोविर टेबलेट्स। अलग अलग डोज में अलग अलग डॉक्टर देते हैं, कई महीनों तक चलेगा कोई पूरी ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन पहले कुछ टाइम बहुत जरूरी है। ट्रांसप्लांट अगर हो गया उसके बाद ओके it's all right, video is in. Yes, sir, video is in, sir. Okay, all right then. So so इन्फेक्शन जब अगर हो गया और ना होने के लिए हम लोग जो प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंगल के लिए भी इन्फेक्शन, हमेशा फंगल इन्फेक्शन के लिए टेबलेट नहीं दिया जाता है। अगर लेकिन कोई रिस्क ज्यादा है, डायबिटीज है, उम्र ज्यादा है, ऐसे भी आप स्केल बीमारी का स्टेज ज्यादा है, तब देते हैं। तो एंटीवायरल के सिवाय बाकी लोग अपना अपना प्रैक्टिस आपका रिस्क फैक्टर देख के करेंगे। हाइजीन बहुत जरूरत है। आप जब पानी है, खाना है, जो आप लोग संभाल के लिए वो इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन के बारे में बात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, हमें ज्यादा नहीं बोलना है। डिस्कशन में टाइम पे अगर आ गया है तो हम लोग कुछ जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। ट्रीटमेंट, अगर इन्फेक्शन हो गया, पकड़ लीजिए आप आने के टाइम ही आपका इन्फेक्शन हुई, डायग्नोसिस के टाइम, तो शुरू से ही एंटीबायोटिक्स का, जैसा इन्फेक्शन हुई है वो हिसाब से एंटीबायोटिक्स का शुरू होगा। अगर फंगस का इन्फेक्शन हुई है, डायग्नोसिस कई प्रकार का इन्वेस्टिगेशन के बाद में पकड़ा गया कि ये फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल मेडिसिन है। बहुत ख्याल रखना है ये ट्रीटमेंट के दौरान, अगर एंटी फंगल ड्रग दे, कौन ड्रग के साथ कुछ का ड्रग रिएक्शंस होता है वो जानना जरूरी है। वो हिसाब से आप डॉक्टर के साथ बात कीजिए, आप कोमॉर्बिडिटी के लिए क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं वो। एंटीवायरल ट्रीटमेंट, कभी कभी आप एसाइक्लोविर ले रहे हैं माइलोमा के लिए, फिर भी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, चिकन पॉक्स हुआ, हर्पिस जोस्टर हुआ, तो उसके लिए स्पेशल ड्रग्स एसाइक्लोविर का डोज बढ़ाया जाएगा। नहीं तो नहीं, अगर दवा का जरूरत हो, अलग वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो अगर अलग वायरस क्या होते, कोई कोई लोग HIV लेके आते हैं, उनके लिए भी जरूरत होता है। फ्लू के लिए ज्यादा मेडिसिन नहीं है, फिर भी अगर जरूरत हो तो कोई वायरस के लिए, पकड़ लीजिए अभी का जो चल रहा है फ्लू, उसके लिए कोई टेबलेट्स इस्तेमाल किया जाता है, जरूरत हो सकता है उसका। अगर टीबी हुई, यस, टीबी का मेडिसिन भी जरूरत होगा। तो इन्फेक्शन इन शॉर्ट वही है। माइलोमा इम्यून सिस्टम का बीमारी है। इम्यून सिस्टम का अगर बीमारी हुई तो इम्यूनिटी हमारा डाउन हो जाता है, और
उसके लिए बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। प्रिवेंशन के लिए लोग कभी कभी अगर एक बार कई बार इन्फेक्शन हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट का दौरान पकड़ लीजिए आपका स्पेशल मेडिसिन जैसे दाराटुमुब चल रहा है, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स देखेंगे डॉक्टर काफी लो हो गए, जो 400 से नीचे आ गए 200, उसके लिए लोग इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे, साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट भी चले और इन्फेक्शन का रिस्क भी काफी कम रहे। आई थिंक इन शॉर्ट यही इन्फेक्शन के बारे दौरान है, सवाल आते रहेंगे तो हम लोग जवाब देते रहेंगे। आई कैन स्टॉप हियर। Thank you, sir. Thanks a lot about the brief about the infections in myeloma. अगर कोई पेशेंट्स को कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। यस मनमोहन जी बताइए। Vishal, can you make the attendees ask the question? Yes. हाँ मनमोहन जी बताइए। क्या इसमें फीमेल्स को यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है? जरूर जरूर, काफी कॉमन है ये एक्चुअली। तो माइलोमा में जैसे जैसे एज बढ़ता है, माय मदर एज was 74 when she was diagnosed with the myeloma at stage 3, yes, and good treatment was given and she was recovering very fast for the first 4 years. Then almost M spike vanished, but at the 5th year again it appeared when the medicine was reduced. Instead of weekly or fortnightly, it was started monthly. So this myeloma bounced back, and ultimately on 18th February we lost her. sorry to know that. And the last moment she was infected with pneumonia. Pneumonia may be due to some COVID infection and all, because she went to some program from there, she might have got. And then ultimately in PGI, she was under treatment, and fungal infection treatment was on, and then UTI infection it was on. And all these infections can be due to myeloma. Thank you. We share your grief with you Okay. and your family. Right. Myeloma, when it comes back, Right. soon or after a few years, Right. we use all stronger treatment. Despite that, disease might come back, and especially a drug like daratumumab is being given, people Right. are prone to develop infections. That might have happened. And pneumonia is one of the commonest infection when disease is not under control and patient's immune system is very low. Females, when age advances, urinary tract infection is extremely common, and with a disease like this and kind of treatment being given, this is what happens in myeloma when things go out of control. Infection might happen in various organs. They don't even respond to treatment very well. Even if there is response, resistant bugs do come in. So it's a difficult situation for the person, family, healthcare workers. That's what we all go through during treatment of a difficult disease. Thank you for your comments. One thing I would like to ask for a minute, that she was maintaining very well creatinine from 0.6 to 0.9 during whole of the time of the disease for the last 5 years. But the last 3 weeks during the before leaving us, her creatinine went to 6.1. Yes, probably disease came back in a very aggressive way. And Okay. that might happen. Sometime even infection also might cause it, but most possibly Dr. Malhotra and all might have explained everything to you. What might have Yes, happened. yes. Team was explaining it is due to dehydration. There is a acute shutdown of both the renal. Yeah.
So that's why, but they tried to recover it. They brought it down to 1.66 before we lost her. Very sorry to that. But it is due to myeloma only that It is the this interaction of, disease or relapse of myeloma it's interaction of everything. As we started talking right from the beginning, right. the myeloma is very active. Normal and immunoglobulins or proteins that are necessary for fighting infections, they go Right. down. And that's because of that, Right. that factors coming in and make a person extremely weak and vulnerable to infections. Okay. So what precaution you suggest, sir? Although you might be talking on it later on, maybe I have asked the advanced question. That what precautions must be taken to avoid all these infections? So people would give, elderly people would give drugs right from the beginning. Some people would use antibacterial tablets, antiviral tablets, antifungal Right. tablets, and hygienes, and following up very, very regularly every week, looking at, despite these precautionary measures, if any infections developing. Sometimes we see tip of the iceberg with all these investigations, clinical features, etc. There's a lot of things do happen inside the body where the immune system is extremely low. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Manmohanji. Thanks for asking the question. If we have no other question, I think let's proceed to the next part and we can have the questions following that. So next we have Dr. Sumit Mirg, who is going to talk to us about vaccinations in myeloma. Over to Dr. Sumit, please. Am I Sumit, audible? unmute. Sumit, you need to unmute yourself. Sir, am I audible? Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Yeah. Sumit, I think you are not audible yet. I think you need to just unmute yourself, please. No? We are still Sir, am able I to see audible them. now? You are intermittently audible. The fact Sir, is your mute button is still on. is my screen visible, sir? I have No, unmuted not it. okay. Not yet. Not yet. Vishal, can you just look into Unmuted it. this? Is it? Am I audible now? We can hear you. Yes. Okay. Okay. So is it visible, sir? Is my We screen not- visible, sir? We can see No. you. Yeah. We cannot see your screen yet. Ayo, okay. Are you using I'll the share just screen? share again. Yeah, just share the share screen once again. Yes, yes. Sir, is my screen visible? Not yet. Okay, I'll try for the last time. Is my screen visible, sir? Not yet. Is Not my yet. screen visible, sir? No. Okay, I think I'll just say, and because there is some issue, I'm not sure what is the issue. Okay, so vaccination is a very important part. As sir already said that infections are very important, and it is the most important cause जिसकी वजह से लोगों की जान जाते हैं, especially in the first 3 to 4 months of diagnosis of myeloma, or even when the myeloma disease comes back. What happens when we infection? The natural immune system is that our immune system starts to fight the infection. Patients who are already having a lesser immunity because of the cancer per se, because the treatment per se,
they are not able to fight against the infection in proper time. तो नॉर्मली हमें सब में जो नॉर्मल जिनको कैंसर नहीं होता, in us we develop antibodies to fight against the infection. Antibodies are the good proteins. So when Dr. said that yes, even in myeloma we have an M band, we have some immunoglobulins. This M band is a protein. These are bad proteins. तो ये bad proteins हमको बचा नहीं पाते infection के against. What we need is good proteins. So unfortunately, cancer patients, especially myeloma patients, when they are on treatment, they cannot adequately because of reasons, cancer, things. तो इसलिए हमको कोशिश करनी है कि वो इन्फेक्शन को अगर फाइट कर पाए तो उनने कुछ स्ट्रैटेजीज यूज की जिससे उनको इन्फेक्शन जल्दी फाइट कर पाए, या अगर उन्हें इन्फेक्शन हो भी जाए तो उतना सीवियर ना हो ताकि किसी की जान न जाए. So one Sumit, important component of that is vaccination. Sumit, I'll interrupt you once. Your voice is actually wavering, and probably it's because of the internet connection. You can put off your video, shut off your video, so that if there is a low band internet width, so at least we can hear you better. Can you hear me now properly? Yeah, I think No. it would be good if you take off your video, shut your video and just speak. Yeah. I have put it off, sir. Am I audible now proper? Yes, Bit you better. are. Yes, Yeah. you are. Better. Yeah. Okay. तो जैसे हम बच्चे लोग को वैक्सीन लगाते हैं उसको बोलते हैं टीका या उसको बोलते हैं लसीकरण इन वेरियस वर्ड्स. सो वो जो वैक्सीन होता है या टीका होता है वो कैसे हमको हेल्प करता है. कोई भी जंतु का हम एक पोर्शन निकालते हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन ना कर पाए, लेकिन वो पोर्शन को हम छोटी मात्रा में हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या तो ओरली देते हैं. आपने सुना होगा पोलियो वैक्सीन जो बच्चे लोग को देते हैं, डिप्थेरिया वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन जो बच्चे लोग को देते हैं. वैसे ही हम जो बुजुर्ग होते हैं मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज या जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें ही ये छोटा सा पोर्शन ऑफ जंतु का जो प्रोटीन होता है उसको हम एक मॉडिफाइड फॉर्म में देते हैं. वो मॉडिफाइड फॉर्म में देने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है और वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में लंबे समय तक रह पाती है. कई बार लंबे समय तक रह नहीं पाती, इसके लिए हम कुछ इंजेक्शंस का एक्स्ट्रा डोज देते हैं, उसको बोलते हैं बूस्टर डोज, ताकि वो प्रोटीन की मात्रा अगर कम हो जाए तो वापस उस लेवल तक बढ़ जाए. तो ये प्रोटीन आगे कभी भी हमको इन्फेक्शन हुआ तो उसके खिलाफ फाइट करने में फास्ट काम करता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, या अगर इन्फेक्शन हो तो ऑब्वियसली कम तीव्र का हो या कम सीवियरिटी का हो जिससे जान ना जाए. तो वैक्सीन्स, कौन से वैक्सीन्स देने चाहिए माइलोमा के मरीजों को? सो 3 वैक्सीन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट वैक्सीन इज द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. हमने सुना है फ्लू का सीजन चालू है. इनफैक्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 8 to 10 months a year फ्लू होता रहता है. तो इसलिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिसका नाम है इन्फ्लूवैक या फ्लूजोन कई नाम से आता है, ये हम हर माइलोमा के मरीज को बोलते हैं कि जैसे उनका डायग्नोसिस हो, उनको ट्रीटमेंट शुरू होना हो या नहीं शुरू होना हो, उनको दिया जाए. और ये वैक्सीन एवरी ईयर दिया जाता है बिकॉज एवरी ईयर जो फ्लू वायरस का जो वैक्सीन की जो जंतु होता है वो बदलता रहता है. इसके लिए हर बार उसको इम्यूनिटी पैदा करने के लिए ईयरली वैक्सीन दिया जाता है. इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. दूसरा वैक्सीन होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन. तो हमने सुना होगा निमोनिया. निमोनिया माने छाती में इन्फेक्शन होना, लंग में इन्फेक्शन होना, उसको बोलते हैं निमोनिया. तो निमोनिया को एक इंपॉर्टेंट जंतु करवाता है जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकस. तो न्यूमोकोकस के खिलाफ हमारे पास इंडिया में, भारत में 2 वैक्सीन है. एक को बोलते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको शॉर्ट फॉर पीसीवी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जिसकी एसवीवी बोलते हैं. तो रिकमेंडेशन ऐसा होता है कि जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है पीसीवी वो पहले दिया जाए और उसके रेकमेंड किए जाते हैं कि 3 डोज दिए जाएं 2-2 महीने के अंतराल पर, और लास्ट डोज के तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होता है न्यूमोकोकस का पीपीएसवी वो दिया जाए. कौन से शेड्यूल में देना है, कौन से मात्रा में देना है, ये आपकी डॉक्टर आपको समझा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है. इसका वैक्सीन जो पिछले 3 साल में काफी फेमस हुआ है हमारे कंट्री में
और दुनिया भर में भी, उसको बोलते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन या वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन आपको जो भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, बट दिया जाना चाहिए। अगर 2 डोज मिल चुके हैं किसी मरीज को तो उसको तीसरा बूस्टर डोज भी लगाना चाहिए, जिससे प्रोटेक्शन ज्यादा हद तक होता है। 2 वैक्सीन हैं जो ऑप्शनल होते हैं। चौथा वैक्सीन जिसका नाम मैं ऑप्शनल बोलूंगा वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बेसिकली माने हमारे लिवर में इन्फेक्शन हो जाना। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बेसिकली अगर किसी को या तो पहले वैक्सीन इन्फेक्शन हो चुका है तो हम उसकी एक एंटीबॉडी की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं एंटी HBS, उसका एक लेवल करते हैं ब्लड में। उसका लेवल अगर 10 यूनिट के नीचे है तो हम बोलते हैं कि उसका प्रोटेक्शन का लेवल काफी कम है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का एक एक्स्ट्रा डोज या बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। एंड द लास्ट वैक्सीन विच इज ऑप्शनल, काफी इंटरनेशनल सोसाइटीज रेकमेंड करते हैं और इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसको बोलते हैं शिंगरिक्स वैक्सीन। बचपन में हमने सुना होगा चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कर देता है। तो जो नॉर्मल इम्यूनिटी वाले मरीज इंसान होते हैं उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है कैंसर की वजह से या इलाज के दौरान, उनमें वो वायरस दोबारा बढ़ सकता है बिकॉज बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से हमको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसको बोलते हैं शिंगरिक्स वैक्सीन। अगर वो आपको मिलता है कहीं पे तो ठीक है, बट अगर नहीं मिलता है तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमेशा कोशिश करना है कि अगर BMT हो जाए तो BMT वाले मरीजों को 6 से 12 महीने के बाद हम ये 3 वैक्सीन के अलावा 2 वैक्सीन और रेकमेंड करते हैं। एक जो वैक्सीन और रेकमेंड किया जाता है इन्फ्लुएंजा निमोकोकल के अलावा, उसको बोलते हैं मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल भी एक ऐसा एक इन्फेक्शन है जो हमारे गले में होता है और उसके बाद एक खराब इन्फेक्शन कसता है अगर उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एडिक्वेट प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी ना हो। और पांचवा एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन हम यूज करते हैं जो एक कॉम्बिनेशन होता है डिप्थीरिया, टेटनस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 3 जंतुओं को मिला के एक वैक्सीन बना जाता है, उसको बोलते हैं पेंटासेल। वो भी हम ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स के बाद। तो ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं। अगर नॉर्मल इंसानों में ये 90% तक प्रोटेक्शन दे पाते हैं तो कैंसर के मरीजों में उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, 50 to 60% तक प्रोटेक्शन मिलता है। बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू नॉट गेटिंग एनी प्रोटेक्शन, इवन 50 to 60% इज मच बेटर, ताकि इन्फेक्शन की तीव्रता अगर हो तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी और तीव्रता कम हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप एक सुरक्षा कवच इमेजिन करते हैं अपने आसपास, तो वो प्रोटेक्शन लेयर या सुरक्षा कवच होता है वैक्सीन का, जो इम्यूनिटी पावर होता है या जो प्रोटेक्शन देता है। हम पुराने जमाने में बोलते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट टू बी ऑनेस्ट वैक्सीन के जमाने में प्रिवेंशन इज एज गुड एज अ पाउंड ऑफ क्योर। हिंदी में वो बोलना चाहूँगा, दुर्घटना से सावधानी भली, तो प्लीज वैक्सीनेट जरूर करवाइएगा अपने आप को। थैंक यू। Thanks a lot, Sumit. That was very, very nice. So if we have any comments, I think we have one comment from Mr. Sandeep Verma. हाँ वर्मा जी बताइए, आपका अनम्यूट कर लीजिए पहले। जब तक संदीप वर्मा जी पूछेंगे, सुमित, मैं एक पेशेंट्स की तरफ से एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। सो ट्रांसप्लांट करने के बाद कितने दिनों के बाद हमें मतलब वैक्सीनेशन कराना चाहिए? तो ट्रांसप्लांट के बाद अंदाजन 6 मंथ्स के बाद हम बोलते हैं वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर किसी को कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं मिला है तो उसके लिए एज अर्ली एज 3 मंथ्स के बाद भी हम वैक्सीनेट कराते हैं, अगर मरीज स्टेबल है और उसके लायक है तो। नाउ अगर किसी पेशेंट ने जिनको लंबे दौर से अगर बीमारियां चल रही है तो कितने दिनों के बाद फिर से वैक्सीन लगवाना चाहिए जो ऑलरेडी एक बार वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? सॉरी सर, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन?
Yeah. So for those people who are having diseases for prolonged duration, so after how much time should they get revaccinated? सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो एवरी ईयरली दिया जाता है. न्यूमोकोकस का वैक्सीन जो होता है पॉलीसैकेराइड वाला वैक्सीन, उसको बोलते हैं PPSV. उसको हम बोलते हैं कि एवरी 5 इयर्स पे उसका एक बूस्टर दिया जाए ताकि उसकी एंटीबॉडीज की मात्रा एक एडिक्वेट लेवल पे रही हो. और अगर पेशेंट बीमार है तो एज सून एज अ पेशेंट रिकवर्स वी कैन रीवैक्सीनेट दैट पेशेंट, बिकॉज कई बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के डोजेस मेजॉरिटी पेशेंट्स को एक डोज काफी होता है, बट कुछ मरीजों को 2 डोज भी लगता है उनको एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिलाने के लिए. So depends upon a case to case scenario where the individual doctor may prescribe an extra dose if required. डॉक्टर सुमित, आई एम दिलीप कुमार मेवाड़ा. मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नॉर्मली पेशेंट जो होता है वो मेंटेनेंस थेरेपी पे होता है, तो क्या ड्यूरिंग द मेंटेनेंस थेरेपी ये वैक्सीन ली जा सकती है क्या, और उसके लिए कोई मतलब CBC या ऐसे पर्टिकुलर उसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या बिफोर वैक्सीन? Absolutely good question. तो पहला, मेंटेनेंस थेरेपी के दौरान वैक्सीनेशंस आर एब्सोल्युटली सेफ. दूसरा, वैक्सीनेशन लेने के पहले कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. एज सून एज once 6 months have gone past and your doctor feels that you are stable, तो वैक्सीनेशन दिया जा सकता है. वैक्सीनेशन की मेजॉरिटी ऑलमोस्ट इट इज वेरी सेफ. कुछ लोगों को हल्का सा बुखार आता है 24 घंटे के दौरान, जो पैरास्टामोल की दवाई से ठीक हो जाता है, बट कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीन से होते नहीं. दे आर सेफ. You already answered my second question. Thank you very much, sir. Yeah. Thank you, Mr. Dilip. संदीप वर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज. ओके, चैट बॉक्स में डाल दीजिए अगर नहीं हो रहा है. सो जो पेशेंट्स अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं एंड उस सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स कोई ना कोई आपके जवाब दे देंगे. सो आई थैंक डॉक्टर सुमित फॉर एन एक्सीलेंट डेलिब्रेशन ऑन vaccinations. Now we would go to our third topic, which is going to be on antimicrobial prophylaxis from Dr. Pranthar. So Pranthar sir, over to you, please. Yeah, thank you. And मैं भी हिंदी में बात करने का कोशिश करूंगा. तो ये है कि एंटीबायोटिक्स तो हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है ना. तो अभी भी देखिए इतना वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन सब लोग को पूछिए कि वो एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, कोई ऑगमेंटिन ले रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अगर एंटीबायोटिक लेते हैं तो अगर उसकी जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस हो जाते हैं. लेकिन जैसे कि प्रोफेसर सैकिया ने पहले ही बताया कि मायलोमा का प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक कैंसर नहीं है, ये कैंसर उस चीजों का है जो हमारे सुरक्षा कवच है. इसका मतलब जो प्लाज्मा सेल्स है, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो मिसाइल्स बनाते हैं, वहीं पे जाके वो गड़बड़ कर देते हैं. तो उसमें तो इन्फेक्शन ज्यादा होना ही है. और ऊपर से अब देखिए कि हम लोग जब ट्रीट करते हैं तो सब दवाई के बीच रहता है स्टेरॉइड्स. वो स्टेरॉइड भी आपका इम्यूनिटी कम कर देते हैं और स्टेरॉइड भी ब्लड ग्लूकोज को ज्यादा कर देते हैं. अब बट डायबिटीज अगर आपको हो गया है तो आपका बाकी जो काम है ना इम्यूनिटी का, जो सेल्स का, वो भी थोड़ा खतरे में रहते हैं. तो मायलोमा का जो एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस का इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसमें ये है, पहला है कि आप जब शुरू कर रहे हैं ट्रीटमेंट, उसी टाइम जब डिजीज सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसी टाइम आपको सबसे ज्यादा इंफेक्शन होने के चांस है. ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं जो न्यूली डायग्नोस्ड है. तो उसमें से recommendations are, the firmest recommendation is for antiviral prophylaxis. और वो सैकिया सर ने बताया था एसाइक्लोविर हम लोग देते हैं. डोजेज कुछ फर्क पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे डोजेज को कंपेयर करके देखा गया है, क्योंकि अगर आपको मायलोमा है और ऊपर से आपको बॉटेजोमी मिल रहा है
तो आपको 6 से 8 गुना ज्यादा चांस है हार्पिस जोस्टर या चिकन पॉक्स होने का। तो इसको प्रिवेंट करना है। जैसे सुमित ने बताया, अभी जो रिकॉम्बिनेंट शिंगरिक्स वैक्सीन आया है, वो जब नहीं भी था तो हम लोग एसाइक्लोविर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम होता है जो मायलोमा पेशेंट हमारे पास किडनी फेलियर लेके आते हैं, क्योंकि एसाइक्लोविर भी उसमें हमको डोज एडजस्ट करना पड़ता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि हम लोग जब उसको यूज करते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं। तो वो इंडिविजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। वो आपको जो मायलोमा ट्रीट कर रहे हैं वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन यूजुअली ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स आर ऑन एसाइक्लोविर, कुछ ना कुछ डोज पे ये चलता रहता है। और ये याद रखिए, स्पेशली जिसको मायलोमा हुआ है और जिसको बॉटेजोमिब मिल रहा है, इसमें एसाइक्लोविर प्रोफाइलैक्सिस हैज बीन डेफिनेटली रिकमेंडेड। दूसरा है कि बाकी कुछ एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। तो पहले भी जब मायलोमा पेशेंट या जिसको हम बोलते हैं कि बुखार आ सकता है, फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया, एक एंटीबायोटिक यूज होता है जिसका नाम है लीवोफ्लॉक्सासिन। वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का छोटा भाई है। तो अभी तक जितना ट्रायल्स हुआ है या मेटा एनालिसिस वगैरह हुआ है, उसमें देखा है कि पहले 3 महीने में, मतलब आज आपका मायलोमा डायग्नोसिस हुआ और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, तो पहले 3 महीने में लीवोफ्लॉक्सासिन देने से आपका कुछ कुछ इन्फेक्शन होने का चांस कम है और इन्फेक्शन रिलेटेड डेथ का चांस भी कम है। लेकिन इसमें हम लोग को यह भी समझना चाहिए कि हमारे देश जैसा एंटीबायोटिक मिसयूज उस देशों में नहीं होता है जहां ये स्टडी हुआ है। तो कभी कभी हमने देखा है कि सब लोग ऐसे ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीवोफ्लॉक्सासिन लेते रहते हैं, लेकिन स्टडी में जो दिखा गया है कि अगर आप देते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ते नहीं है। इसीलिए बहुत सारे मायलोमा ट्रीटर्स लीवोफ्लॉक्सासिन पहले 3 महीने के लिए देते हैं, दिन में 1 बार। अच्छा, एंटी फंगल का ये है कि रूटीनली हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कुछ जैसे देखते हैं कि पेशेंट कितना फ्रेल है, उसको पहले क्या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मिल रहा था, उनका डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं, क्योंकि ज्यादा देर तक स्टेरॉइड देने से भी हम लोग एंटी फंगल प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, कभी कभी फ्लूकोनाजोल देते हैं। और अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया है और वो सस्पेक्टेड फंगल था, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वोरिकोनाजोल टैबलेट यूजुअली यूज करते हैं, कभी कभी दूसरा भी यूज करते हैं। तो इन्फेक्शन में जब हम कुछ दे रहे हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, तो हर मरीज एक जैसे नहीं है। मायलोमा तो सबको है, लेकिन किस किस का उसके पहले क्या था। जो लोग स्मोक करते थे तो उसका सीओपीडी हो गया होगा, तो उसका एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कुछ और चल सकते हैं। तो एक तरफ आपके हैं वैक्सीन्स जो आपको कुछ कुछ ये जो बैक्टीरिया है इससे आपको प्रिवेंट करेंगे, कुछ कुछ वायरस से प्रिवेंट करेंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा हमने बताया, वेरिसेला जोस्टर वायरस के बारे में बताया। और एंटीबायोटिक हम इसीलिए देते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि कुछ कुछ इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था यूटीआई के बारे में। अगर रिकरेंट यूटीआई होता है जिसको मायलोमा नहीं भी है, उसको कभी कभी हम लोग नाइट्रोफुरंटोइन बोल के एक दवाई देते हैं फॉर 3 to 6 months। तो ये बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन है, लेकिन मरीजों को क्या जानना चाहिए, उसको अच्छे से, अगर हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो एक हॉस्पिटल में दिखा रहा है दूसरे में दिखा रहा है, उसका एक डायरी रहना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, क्या हुआ था, उसको एडमिशन का जरूरत पड़ा या नहीं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी के ऊपर, ये जो मरीज की जर्नी है, इसी के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हमको जानना चाहिए कि जहां वो रह रहे या जहां ट्रीटमेंट हो रहे, वहां का लोकल बैक्टीरिया कैसा है, उसका सेंसिटिविटी कैसा है, और उसी हिसाब से हम लोग दवाई देते हैं। तो एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटीवायरल प्रोफाइलैक्सिस इज
required in myeloma patients. और एक चीज और जो टच करके गए थे तपन सर, वो है कि कभी कभी एल्डरली लोगों को ट्रीटमेंट चल रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, हम लोग नाप के देखते हैं कि आईजीजी कम है, तो कुछ कुछ रिकमेंडेशंस में है कि महीने में एक बार हम आईवीआईजी देते हैं। कुछ स्टडीज दिखा है उसमें कुछ असर पड़ता है, कुछ में दिखा है उतना असर नहीं पड़ता है, बट इट इज ऑल अ डिसीजन डिपेंडिंग ऑन कितना इन्फेक्शन मरीजों में हो रहा है। आई थिंक दैट्स ऑल उदय, थैंक यू। A lot, sir. It was very, very lucid description कि एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीफंगल्स कब कब हमें देना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया सर। सो वी हैव मेनी क्वेश्चंस फॉर यू। सो यस, मनमोहन जी पूछिए सबसे पहले। सर मैं ये मनमोहन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी, ये मैंने पूछना तो नहीं था, एक सजेशन है छोटा सा कि since I have lost the patient, hardly matter what, it depends upon the God what life he has granted. ये जो हम माइलोमा का ट्रीटमेंट देते हैं उसमें ये वैक्सीन का पोर्शन जो है that is not very common. Very few people who are curing the myeloma, they are suggesting this vaccination. Dr. Sumit Ka, I'm thankful to him that he has suggested regular vaccination is required. This protocol, this should be included in the protocol for treating myeloma. मनमोहन जी, fully agree. yeah, sir, please, Pranta sir, go ahead, please. Yeah. So let me tell you that कभी कभी क्या होता है ना कि ये रूटीन चीजों को उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता है। मे बी देयर इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। तो मेरा ये सलाह है कि आप लोग जब माइलोमा के पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप बना रहे हैं, यू शुड ऑल्सो मेक द पेशेंट्स अवेयर। क्योंकि मैंने देखा था जब कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा था तो बहुत लोग डर से नहीं ले रहे थे, ठीक है, और वो माइलोमा पेशेंट्स भी थे। तो ये एक माइंडसेट होता है। अगर आपको मालूम है कि वैक्सीन काम करते हैं और हम दे रहे हैं, और अगर हमने गलती से लिखना भूल गए या आपको बताना भूल गए, तो आप हम लोग को बताइए कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम सिर्फ माइलोमा पेशेंट को नहीं दे रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं 60 के ऊपर जितने लोग हैं, और अभी नया स्ट्रेन आया है, ठीक है, नया स्ट्रेन वाला वैक्सीन ये मार्च के एंड अप्रैल में आता है। तो हर साल अब जब लेते हैं तो हर साल जितना भी एल्डरली लोग हैं जो ससेप्टेबल है, डायबिटिक है, वो सबको हम बोलते हैं कि ये लेना जरूरी है। लेकिन ये हम भी मानते हैं कि कभी कभी ये मिस हो जाते हैं, तो द अवेयरनेस शुड बी ऑन बोथ साइड्स। उदय प्लीज। नहीं सर, बस I wanted to convey the same. Wonderfully said, sir, wonderfully covered. Manmohan ji, now you should take it up as a task along with Mr. Dilip and Dr. Gayatri to take this forward and to educate more and more people about the vaccinations and the role of the antibiotic prophylaxis in these individuals. Can we hear from Mr. Sandeep Verma, please? हेलो, गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. Please go ahead. सर मैं एक क्वेश्चन था कि जैसे कि सर मेरी फैमिली में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है सर, आईटीपी क्रोनिक। हेलो। Yeah, please go ahead, please go ahead. सर मेरी फैमिली में आईटीपी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो सर वो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? Yeah, I think Sumit can, but anyway, I'm just giving you a clue. It can be taken, and mind you, myeloma में जो वैक्सीन हम बोल रहे हैं ना, अगर आप रिकमेंडेशन देखेंगे तो it is not only for the patient, it is also for the non-immune family members and caregivers. I think Sumit can amplify on that. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. So, संदीप जी आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव भी हैं जिनको क्रॉनिक आईटीपी है, और जब कोरोना वायरस का वैक्सीन आया था, सो द फर्स्ट पर्सन टू आस्क सर मेरे फादर को मल्टीपल माइलोमा भी है सर, साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड मल्टीपल माइलोमा। ओके, यस सर। So, majority of the vaccines are proven safe even in patients who have ITP. Yes. केवल 2 वैक्सीन्स में थोड़ा प्रॉब्लम है जो उन्होंने कुछ लोगों में देखा गया है। उसमें से एक है MMR वैक्सीन,
जो एनीवेज हम कैंसर के मरीजों में ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते बिकॉज वो एक लाइव वायरस वैक्सीन होता है। बट जो कॉमन वैक्सीन हम एडवोकेट करते हैं माइलोमा के मरीजों के लिए, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या न्यूमोकोकल हो या कोरोना वायरस का वैक्सीन हो या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो, ऑल दीज आर Yes. एब्सोल्युटली सेफ इन ITP पेशेंट्स. So Yes, sir. don't fear and please go ahead because the benefit is much higher than the very exponentially small risk of side effects. That is why. Okay. Can I Thank you, now- Mr. Sandeep. Yeah. Yeah, 1 second, Mr. Dilip. Yeah, we will just give the option to Ms. Sunita Balvinder and then you can go ahead. Sure. Okay. So, Miss Balvinder ji, बताइए आपको, you wanted to comment. Hello. Yeah, please go ahead. Sir, my question is that because every year, or I'll say twice in a year, I'm getting this infection, cold and cough, and the fever goes quite high. And as of now, I am not on maintenance therapy. I'll say I'm a survivor. It's 10 years now. But this infection, because being low on immunity, I usually catch this cold and this. And when doctor recommended me this influenza vaccination, and I went to my local doctor, and he said, no, already you had this cold and cough, so not required every time, but I'm catching this infection again and again. So I need your recommendation that, okay, if I've gone through it, so is it that year they can miss it? Or he said, okay, now come in the month of August. I'm totally confused that when it should be taken. Okay, Sumit, you want to answer this? Though Yes. Hari sir has already written the answer, he has typed out the answer, but yes, Sumit, you can elaborate on that, please. ओके, सो बलविंदर जी, आपका सवाल एकदम सही है। काफी पेशेंट्स हमको भी सेम सवाल पूछते हैं। तो सर्दी खांसी होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, इवन कैंसर पेशेंट्स, नॉन कैंसर पेशेंट्स दोनों में। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयरली लगाइए। इन्फ्लुएंजा के एक वायरस है जिसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, या उनको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन्स। तो वो स्ट्रेन और टाइप जो होता है वो हर साल बदलता रहता है। जो इस साल आपने वैक्सीन लगाया हो सकता है वो आपको अगले ईयर इन्फ्लुएंजा के उस स्ट्रेन के लिए प्रोटेक्ट ना कर पाए, इसलिए एवरी ईयर उसका वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन या टाइप जो घूम रहा है दुनिया में या मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, उसके हिसाब से वो इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन बनाया जाता है। किसी को अगर सर्दी खांसी है या एक्चुअल में बुखार है तो हम रेकमेंड करते हैं कि बलविंदर जी, आपका क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ है? Yeah, yes, sir, I got it. And it's a message to me that I have to get it done because I'm a frequent traveler. And as of now, also, I'm taking this call while sitting outside at the airport. So it's a very valid answer since because of the traveling and I can catch hold of infection quite frequently. So I have to tell, but I don't know why my doctor is giving me that this time, this year, you have to miss it and next year you can have it. I'm not sure that he said that already you had gone through it and the strains or what you can say, the residues of the infection is already there in my body. So probably I don't need to have this vaccination. I am totally confused. That's why I raised this question to you. And one more thing, बलविंदर जी, मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को अभी भी बोलता हूँ कि प्लीज मास्क लगा के रोम अराउंड कीजिए, बिकॉज कोविड भले ही कम हो गया हो बट इन्फ्लुएंजा इज अ मच bigger threat to our cancer patients. That is why. So please, अगर आप travel कर रहे हैं तो हमेशा मास्क लगा के Sir, mask, by wearing mask, I think 90% of people, they are not wearing. I can see around, but I am the one, I am wearing it because it's my protection. So I have to take care. Thank you, sir. Excellent. Okay, sir, my question is, Prantar sir, good evening. Dilip Mewada here from Myeloma Friends. Sir, हमारे Myeloma Friends के लिए एक question है. Am I audible, sir? Yeah, you're right. Okay. Sir, आप ये जो infections हैं, there are bacterial, viral and fungal infections. तो ये जो है ना, हमारे एक common perception होता है infections are infection. सर इसको थोड़ा highlight करिए ना, viral, bacterial and fungal infection. अच्छा, तो infection कोई भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये बाहर से आके करते हैं।
तो ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का एक तरह से हम लोग देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो अगर आप बोलेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया लोगों के अगेंस्ट में हमारे वीपन ज्यादा है, ठीक है। तो उसको भी हम क्लासिफाई करते होंगे कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब हम बोलते हैं। और बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कौन सा हुआ है, अगर न्यूमोनिया भी हुआ है या ब्लड में इंफेक्शन होता है तो हम लोग कल्चर करते हैं, कल्चर करके सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब बैक्टीरिया एज एन एनिमी इज इजियर टू टैकल देन अ वायरस। तो उसमें हम लोग कल्चर करके सेंसिटिविटी देख के दे सकते हैं। लेकिन इन मायलोमा एंड अदर ब्लड कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स वी डू नॉट वेट फॉर दैट, वी स्टार्ट एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली। ये है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और प्रिवेंटिव हम लोग जो देते हैं वो है सो दैट इट कैन कवर मोस्ट ऑफ द डेंजरस ऑर्गेनिजम्स। और हम लोग ज्यादा तो नहीं दे सकते क्योंकि हर एंटीबायोटिक का भी साइड इफेक्ट रहता है, और ज्यादा देने से हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा रहता है उसमें भी कुछ फर्क आता है। अच्छा, अगर हम वायरस को देखें, वायरस को तो ऐसे भी देख नहीं सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में भी देख नहीं सकते हैं, और उसका आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अभी कुछ कुछ आए हैं, हम लोग बोलते हैं बायोफायर जैसा, कि हम लोग भेजते हैं कि कौन सा वायरस, यू कैन गेट एन आइडिया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ज्यादा एंटीवायरल्स नहीं है कि ए वायरस के लिए ये दवाई है, बी वायरस के लिए ये दवाई है, ये सब नहीं है। तो उसमें हम लोग, बट द गुड थिंग अबाउट वायरसेस, इफ योर इम्यूनिटी इज ओके देन दे आर यूजुअली सेल्फ लिमिटेड। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि मायलोमा में इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो इसीलिए वायरल इंफेक्शन के लिए हम ज्यादा एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप वैक्सीन ले लीजिए। तो हमने कोविड के टाइम भी देखा, यही किया हम लोगों ने, इन्फ्लुएंजा में भी यही कर रहे हैं, और हर्पिस जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस में भी यही कर रहे हैं। तो फंगस कहाँ गया? अच्छा, फंगस का क्या बात है कि बैक्टीरिया जैसे घूम रहे, वायरस भी घूम रहे, फंगस भी है, और वो हमारे इंडिया जैसे एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उसमें सॉइल में है, वाटर में है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसको अंदर घुस के डैमेज करने नहीं देते हैं। अच्छा, फंगस भी जब होता है ना, स्पेशली फंगल निमोनिया होता है, फंगल कुछ कुछ स्किन इन्फेक्शंस होता है जो ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम लोग मायलोमा है, स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी प्रीएम्प्टिव है, और उसमें हम लोग को पता है कि लंग्स में जो हो रहा है वो ये हो सकता है, अगर कहीं और मिल रहा है तो ये हो सकता है। उसी हिसाब से हम एंटी फंगल देते हैं। तो एंटी फंगल कभी बैक्टीरिया को मार नहीं सकते हैं, और कोई एंटीबायोटिक फंगस को नहीं मार सकते। सिमिलरली अगर आप सोच रहे हैं कि आप एंटीबायोटिक खा के वायरस को मार देंगे, ये भी नहीं होगा। तो तीनों अलग अलग क्लास के चीज है, उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमारे अप्रोच अलग है। Thank you, Pranthar sir. I think you explained it well. Going to the next few questions, I'll just read it out. सुनीता जी का सवाल था कि that उनके हस्बैंड ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, तो वैक्सीनेशन ट्रांसप्लांट से पहले करना चाहिए या ट्रांसप्लांट के बाद में करना चाहिए? इसके लिए डॉक्टर सुमित मेघ ने ऑलरेडी जवाब दिया उनको कि that अगर कोई ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा है तो इट्स बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड आफ्टर द ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट, डॉक्टर गायत्री जी का सवाल था कि दैट इन्फ्लुएंजा के लिए व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वैक्सीनेट इन ए गिवन ईयर? इसके लिए डॉक्टर सुमित ने ऑलरेडी जवाब दिया है कि मार्च से सितंबर का महीना बेस्ट होता है फॉर गेटिंग द वैक्सीनेशन, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन द फ्लू इज वेरी वेरी कॉमन, सो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द वैक्सीनेशन। सो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिस अदिति, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। पंकज सर, यस प्लीज। ये थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं डॉक्टर सुमित मिर्ग से कि जो विंटर्स में जो है ना वो फ्लू ज्यादा कॉमन है, तो मे बी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में हम जनरली अगस्त सितंबर में वैक्सीन का नया वैक्सीन का जो है वो स्ट्रेन आता है जनरली इन द मंथ ऑफ सितंबर।
तो हम जैसे ही वैक्सीन आता है सितंबर अक्टूबर में हम सजेस्ट करते हैं फ्लू शॉट लगाने के लिए, एटलीस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। आई एम नॉट श्योर कि बाकी इंडिया में वो नया फ्लू वैक्सीन क्या मार्च में अगर आएगा तो मार्च में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सो हियर स्मॉल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। Okay. Actually, manufacturers are stating, Professor Pankaj, that they have already launched the newer version, वो WHO का जो 4 tetra version होता है, and some are launching it in the last week of March and April. Yeah. So I agree with Dr. Pranthar and Dr. Sumit. So we have the new vaccine which is already in the market available, and it's already available in the government supply also. So we are prescribing people to take between March to September. But sir, yes, it could differ from area to area depending upon the maximum amount of flu cases in which part of the country and where. So I agree, probably in Delhi and in Chandigarh areas, because the smog season is between October to February. So the flu cases would be highest at that particular point of time. I will go to the next question. So Miss Aditi, you can unmute yourself and please ask your question. I mean, it wasn't my question, but just speaking to this, what my doctor had told me with regards to the quadrivalent flu vaccine was that if you are taking it in March, April, then you should look for the vaccine that has the validity through December of that year. And if you're taking it in September, October, look for the vaccine that has validity through March, April of the next year. So just please correct me if that is wrong. No, you are right, absolutely right. So just some things for patients to be mindful of, you know, when you're getting the vaccine, to look at that, because it is important, because those are the updated strains. I had 2 questions, and maybe Dr. Sumit addressed this. I came in later, but could you speak a little bit to the need for revaccination in older patients who are not undergoing a transplant? That was one question. And to Dr. Pranthar, my second question was, I mean, we didn't really talk about PJP prophylaxis unless you were considering levofloxacin for that and not Bactrim. Because I know that there are concerns with levofloxacin in India with TB resistance, etc. So I wanted to know what gets used in India, given that we have a different context of, as you said, of antibiotic resistance in the country. Yeah, thank you, Ms. Aditi. First, I will ask Dr. Sumit to please clarify, and then Dr. Pranthar can take over. Yes, Dr. Sumit, please. So for the revaccination part, influenza is given every yearly, because as you said, there may be a different strain in every year, and we need to get vaccinated against a new strain every year. Second is pneumococcal vaccine, wherein the PPSV, the polysaccharide vaccine, the booster is given every 5 years, so that there is adequate protection against it. And the third, with respect to the concept of revaccination, is called as hepatitis B vaccine. So the patient must have got vaccinated before, but you measure the level of protection by doing a specific test called as anti-HBs. It is basically an antibody against the hepatitis B antigen or protein. So if that level of protection of that respective antibody is less, which means less than 10 units, in that case, we all recommend to get another booster dose. If it is more than that, then revaccination may not be required for hepatitis B. So these are the 3 perspectives for the revaccination point of view. Okay, thanks, Sumit. Sir, Pranthar, sir, regarding the PJP prophylaxis. Yeah, thanks for that question regarding pneumocystis jirovecii PJP prophylaxis. So there have been recommendations that it can be used, but there are also recommendations that they should be used in selected populations. So as I was speaking, I mean, because we know that this usually happens when the lymphocytes are affected to a degree, and it can affect it. I, in my practice, usually routinely don't give PCP prophylaxis. I use acyclovir. I also don't use levofloxacin. Now, PCP prophylaxis I've used in certain conditions, as I told you, when there are underlying lung pathologies, because those people are more vulnerable to it. But if someone is on, then it also can prevent. But sometimes there are studies which have shown that they
this drug, the one you're talking about, Bactrim, and unfortunately in India, most of the brands are not available nowadays, but still Bactrim is, they can sometimes contribute to neutropenia, which can lead to other issues. Thank you. So if Prantha sir permits, so there is few additions as far as the Bactrim or ceftriaxone prophylaxis in myeloma is concerned. Unlike ALL and AML, जहाँ पे हमें उसको लगातार देना पड़ता है, in myeloma, even in the West, they don't give it beyond the first 3 months of a newly diagnosed multiple myeloma. So the highest probability of a person having a problem with chances of having PJP prophylaxis is only in the first 2 to 3 months in a newly diagnosed multiple myeloma. So the role of PJP prophylaxis beyond that is uncertain. So as sir explained, the benefit versus the risk ratio differs. So it can lead to cytopenias and bone marrow suppression. So it is doubtful if it is of any benefit beyond 3 months of the newly diagnosed multiple myeloma. Now, levofloxacin versus Bactrim, we generally, all the hematologists across the country and all the transplanters, we avoid levofloxacin in whichever way it is possible for whatever prophylaxis we are giving. Levofloxacin is given for different other reasons, even in the transplant prophylaxis also. So it's avoided as far as possible because it is a second-line drug for the tuberculosis. And tuberculosis in Hindustan mein itna common hai, so that we don't want to exhaust our second-line therapy for the tuberculosis, so we don't generally give it. So levoflox is definitely not an option, but yes, Bactrim is very, I would say, debatable topic. People, even if they don't give it, it's perfectly okay, as sir explained it. Yeah, we have Dr. Chandni for the comment. Please, Dr. Chandni, unmute yourself. Yeah. Yes, Dr. Chandni, go ahead, please. You are unmuted, but we can't hear you. Can you increase the microphone voice, please? Okay. Yeah, Aditi, you wanted to say something. Please go ahead. No, my questions were answered. I think I just forgot to lower my hand. Okay, no problems. Okay, then I will call back Mr. Dilip. He wanted to add a few points. Yes, Mr. Dilip, go ahead. You wanted to say something. Sir, see, the difference between the clarithromycin and levofloxacin. Because I remember when I was diagnosed, I was prescribed for clarithromycin for a longer period along with Lentex. So that was my question. I can take up that question, so Mr. Mehta. Please, yes, please. yes, sir. Thank you. The clarithromycin at some point of time, when before the new drugs like thalidomide, lenalidomide, etc., became available, and people, very senior people are working in the field of myeloma, found that clarithromycin might have some anti-myeloma activity. So that's one thing that some people still believe in it. Scientific data is not very strong, and that's why people continue to use it. Elderly people, those who are prone to develop respiratory infection, clarithromycin is a good drug. So it can be used for a long period of time, except for some side effects of the upper GI tract. Both as a preventive measures for bacterial infections as well as for some anti-myeloma effect. It's not very popular, but people, those who believe in it, they have not given it up. Okay, thank you. So when you had it, I think people did use it. We used it. We don't use it that often nowadays. It was 2010, sir. Right. Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Dr. Chandni, you can go ahead, please. Ma'am, your voice is still not clear. Ma'am, I think there's some problem with your internet. We can't hear you. Hello? Yeah, 1 second, Ms. Aditi. So Dr. Chandni, what you can do is you can type your question in the chat box.
and one of our panelists or the experts in the field will answer your queries, because we are not able to hear you. So you can just type it in the chat box, please. Yeah, Ms. Aditi, go ahead. I mean, I just had a basic question. I know we've mostly talked about infection prevention, but in terms of can we speak a little bit of if you're showing symptoms or suspect an infection, are there some basic guidelines of what symptoms you need to alert your treating doctor on? At what point of time do you need to, escalate things to testing or, just an overview that, patients can use to understand, when it's an issue that needs to be brought up to their doctor and when it's not. Prantha sir, would you like to take that? Yeah, I think that's a very good question, because usually we say that when you're having a cough and cold, you can take paracetamol and wait. In case of myeloma, especially if you have active disease and you are under treatment, you cannot wait for long. So the usual danger signs are if you develop fever, if you develop cough, which, it's there. If there is expectoration, especially if there is colored expectoration, like yellowish or greenish expectoration, then obviously that's a red flag. And also, whenever sometimes you might get diarrhea, and sometimes even the drugs we use like bortezomib can cause diarrhea. But if you have crampy pain abdomen and you have diarrhea associated with, that is another red flag. Similarly, for urinary tract infection, if you feel that there's a burning, or if you feel that, the urine is reddish, you might not always have all the symptoms, but that can also be the harbinger of urinary tract infection, which can lead to urosepsis later. Otherwise, for skin infections and other things, sometimes we say, okay, this is a fungal infection. But if you see fungal infection on different parts of your body, or say certain things which you don't understand, which are happening in some parts of the body, it is better to err on the side of infection because we have treatment there, rather than, wait for it to get, it gets difficult. And then when you start, you might lose your precious time. Uday, you can add to it. So no, sir, that's perfectly okay. Tapan sir, would you like to add anything? Because you deliberated on the infections. Sir, any further comments on this topic? Tapan sir? Okay. So I think that was well answered, sir. I don't think that I've got anything further to add to what you have told. Okay, so Dr. Chandini, I'll go back to Dr. Chandini's question. So she has typed it in the chat box. She says she was transplanted in end 2018, no subsequent vaccinations done. Madam, this is slightly unusual because generally most of the hematologists, they would definitely vaccinate 6 to 9 months after the transplant. Some people even have started doing it third month, which is okay as per the guidelines. But 6 to 9 months is what 6 to 12 months is what is advisable after the transplant. Then you have relapsed in October 2022, currently on daratumumab. What should be the vaccination course? Okay, ma'am, I'll give you the answer for this. So because Sumit is not here. Now, there are very small series of data because daratumumab kills the plasma cell. So people have a doubt, those patients who are on daratumumab, will they have the same vaccine response or not? So there are small studies which are available on this, and the NCCN network and the IMWG guidelines, these two bigger organizations which are there, which give you guidelines on this, they say that even patients on daratumumab are supposed to be vaccinated like any other patient. So first thing first, the response while on daratumumab with the vaccination is same as those patients who are not on daratumumab. But the information is from small patient data sets. It's not huge studies. So, but the vaccination efficacy more or less is the same. Now coming to the vaccination schedule. So the adult immunization vaccine schedule, which Dr. Sumit elaborated about. So a person has to be on the same vaccination schedule. So we can download that vaccination schedule
from either NCCN network, vaccination in myeloma. That's the guidelines which is available. I'll put it on the group, on the patient groups today evening immediately after this, or I'll forward it to Mr. Dilip and Dr. Gayatri to put it on all the groups. So the vaccination schedule is available. It's a PDF document. You can just tick it up, what all you took and what all to be revaccinated or not. It's there. And there are few vaccines which have to be taken repeatedly, particularly the influenza vaccine, which needs to be done. So on daratumumab, you should take a vaccination if you have not been vaccinated. Hope I've answered that, ma'am. Yeah. And the best part is, even if the efficacy is less, then also it protects. So it is always best to take it. That is what has been proposed. Okay. Mr. Surinder Malik ji, please, you can go ahead with your query. Doctor, good evening. I am Surinder Malik. I had undergone bone marrow transplant in 2018 in Army Hospital, R&R. When you were the treating doctor, I hope you must have recognized me. Yeah, please go ahead. Sir, in 2020, firstly, though I did not, after you left, there was no vaccination was not done, and I was not aware of myself also. And secondly, this has relapsed again in 2022, October, November, and now I am on Darasuma. Sir, Malik sir, so Yes. what I would advise you is, anyway, now Colonel Rajan is there, so he will take care of you very well. But the fact is, vaccination is mandatory after 1 year after the transplant. So the vaccination is important. That's first part. Now, even if the vaccination, as Dr. Chandani was suggesting for another patient, so in the same way, if the vaccination has been missed, no problems. There's never too late to get vaccinated. So you can get vaccinated now. Even while on daratumumab, you should get vaccinated, sir. So I should report to Colonel Rajan? Yes, sir. You should report to Colonel Rajan, first of all, for asking for vaccination, and he will do the needful. Thank you so much, sir. I'm so grateful to you. You're welcome, sir. Okay, we have, Dr. Ms. Aditi, you want to add something? No, sorry, forgot to lower my hand. Okay. So I think we are almost at the flag and we don't see any major other comments in the chat boxes also. And Dr. Tapan and Dr. Sumit had to leave because they had some other commitments. And despite of their busy schedule, they could cater time and join and share their views. I would request Pankaj sir to share his opinions about infections and to sum up the meeting, please. So thank you. I think this is one of the important aspects of myeloma management, the prevention of infections and as well as vaccination. I just would like to caution that, vaccination does not mean that you would be prevented against all the infections. And even, somebody has got the influenza vaccine, that does not mean that all strains are taken care of. And the third part is, as compared to a normal person, many times patients of myeloma may not generate an adequate response also. But in spite of all these limitations, we still recommend vaccination in most of the myeloma patients, as well as taking precautions for the prevention of infections, because as Dr. Prantar said, that the myeloma cells or the plasma cells are our antibody defending against the infection. So these plasma cells are actually affecting those cells which are defending our body against the infection. So they are the problems in patients with myeloma. So hence vaccination plays an important part. And myeloma patients are more prone for infection. So even if one infection goes, the second can come in, the second goes, the third can come in. So I hope so that by this webinar, we are able to generate adequate awareness among the myeloma patients. And as Dr. Prantar said, the advocacy by the patient group is the most important, and they can, sometimes give the feedback to the doctor that, doctor, my vaccination is due, so please suggest me vaccination. So, so in the third week of Myeloma Awareness Month, we have covered a good amount of
good amount of supportive care to the myeloma patients, and we will continue to do that in the next webinar next Monday, and the link will be shared with all. With that, I thank you very much for all the patients and the advocacy group who have attended this seminar. Thank you and take care. Take care of your health. Sir, so before we just close, we have the last part of the meeting, which is the patient sharing my story from the patients. So we have Mr. Lakshmi Narayan here to share his story. So just before we close, we would love to listen from Mr. Lakshmi Narayan. Please go ahead, Mr. Lakshmi Narayan. So thank you so much, sir. मेरा वॉइस आ रहा है सर? Yes, we can hear you very well. Thank you so much for this opportunity for sharing my story. मैं 2008 में मेरे को क्या हुआ, CIDP मतलब MGS ऐसा बोल रहे हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। 2008 में मतलब न्यूरो प्रॉब्लम आया, मैं चल नहीं पाता था, बिल्कुल मतलब बटन्स भी लग नहीं पाता था। उसके बाद 2009 में यो कन्वर्ट हुआ मल्टीपल माइलोमा MM हुआ है। उसके बाद वेलकेयर स्टार्ट किया, मतलब अभी तक 14 साल कंप्लीट हो गया भगवान की कृपा से। आई एम गुड। सो उसके बाद 1 ईयर के बाद 2011 में 2010 में फर्स्ट BMT ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन सिकंदराबाद इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में हुआ। मतलब इसके बाद फिर मैं क्लुप्ता मतलब 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा से स्पीड में। इसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी के बाद फिर रेमिशन में आया, थोड़ा रेमिशन में आया, उसके बाद रिलैप्स हो गया। फिर से दोबारा 2014 में हुआ BMT सेकंड टाइम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ। फिर मैं स्लाइटली रेमिशन है, कंप्लीट रेमिशन में कभी भी आया नहीं। उसके ऐसे चलता रहता था। मतलब 2017 में HL हुआ, लिम्फोमा, लिम्फ नोड में कैंसर हो गया। फिर लेफ्ट साइड लिम्फ नोड में कैंसर हुआ, लिम्फ नोड निकाल दिया, फिर उसका ABVD दिया वो कैंसर के लिए क्यूर करने के लिए। तो सेकंड कैंसर, फर्स्ट कैंसर मल्टीपल माइलोमा 2017 में सेकंड टाइप ऑफ कैंसर आया, उसके वो ट्रीटमेंट कर दिया, मैं ABVD ऐसा दिया, मतलब वो क्यूर हो गया, HL क्यूर हो गया। फिर अभी तक मैं मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब मेंटेनेंस थेरेपी पोमोलोडामाइड 4 mg चल रहा है। 14 साल का जर्नी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद मेरा स्टोरी थोड़ा लंबा है तो क्लिप में दे दिया हूँ 5 मिनट में। थैंक यू। Mr. Lakshmi Narayan, first of all, I would really say you are not just a simple warrior, you are a multi-warrior. Okay, you have fought it so many times, so good. But we have a request from Indian Myeloma Academic Group. We have shared a story writing script with Dr. Gayatri and Mr. Dilip and Ms. Vinita. So what you do is, please, we request you to write down your story. We have given a small performer because we are going to publish this on our website and we are going to publish it, give it a wide publicity to allow people to get confidence. If we fight, we can go ahead. Yes, sometimes we do face problems, but as doctors, we are there with you in your fight to support you. We will act as your shield as far as possible, but we would definitely love to listen to your stories and to spread it to other people to motivate them to get treated, because the biggest problem in India is inadequate therapy for myeloma. Many patients don't come forward. They have apprehensions. So when they listen to you people or read your stories, they'll get confidence in getting treated. So please write your story and share it with us. Okay. And we have Mr. Thank you, Mr. Lakshmi Narayan. We have Mr. Mahendra also to share his story. Yes, Mr. Mahendra. Hello. Yes, we can hear you. Yes. Hello, everyone. My name is Mahendra Banusali. 2005 में माइलोमा डिटेक्ट हुआ था। Can you आवाज आ रहा है मैम? Yes, we can hear you very well. We can hear you very well. Please go ahead. 2005 में माइलोमा डिटेक्ट हुआ था। 2006 में मेरा फर्स्ट
ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हुआ था। ये मेरी जर्नी माइलोमा के साथ 18 साल की दोस्ती मेरी। लास्ट 18 साल में कितनी बार दोस्ती टूटी है, कितनी बार वापस जाके मैंने उसको पटाया, उसने मुझे पटाया, चलता ही रहता है ये हमारा दौर। लास्ट 18 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो लास्ट 2006 में ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होने के बाद नो मेडिसिन, 4.5 साल के बाद रिलैप्स हुई, वापस मुझे माइलोमा को मिलना पड़ा। उसके बाद 2011 में मेरा एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, दीदी डोनर थी, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट इन माइलोमा, जबकि मेरे पास कोई डाटा नहीं था और ना ही कोई माइलोमा ग्रुप था। इसलिए मुझे डाटा कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलना पड़ा। डॉक्टर देवतारे करके अहमदाबाद गए थे, क्योंकि एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का कोई डाटा नहीं था। बाद में 2011 में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हुआ। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होने के बाद मेडिसिन मेंटेनेंस पे था। आफ्टर 4.5 years फिर से माइलोमा रिलैप्स हुआ। और उसके बाद 2016 में कार्ड टी सेल ट्रांसप्लांट नहीं, सिंपल टी सेल ट्रांसप्लांट किया था, क्योंकि मेरा एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हुआ था। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट को ही टी सेल दिया जाता है, तो डोनर का टी सेल कलेक्ट करके मुझे टी सेल दिया गया और तभी पोलाडामाइड, डेक्सा और ब्रोटोसोमिब इंजेक्शन चालू रखे। 4.5 साल के बाद वापस रिलैप्स हुआ। एवरी 4.5 year के बाद मेरी और माइलोमा की दोस्ती वापस रीजनरेट होती है। आफ्टर 2019 में जस्ट एमएंड नहीं आए, डोर्सल में टिश्यू आए थे। तो मैं डॉक्टर तपन सैकिया सर की टीम में रहता हूँ, सर के अंडर में हूँ, और अभी तो मैं टीम का मेंबर हो चुका हूँ, पेशेंट नहीं। तो आफ्टर टिश्यू आए तो अपना रेडिएशन लेके क्लियर कर दिए, लेकिन एमएंड नहीं था। तो कोई मेडिसिन नहीं, कोई नहीं, सिर्फ ब्रोटोसोमिब, पोलाडामाइड और यही चल रहा था। अगेन 2 साल के बाद रिलैप्स हुआ, फिर से एमएंड नहीं आया, टिश्यू आए। सेकंड टाइम रेडिएशन लिए, क्लियर हो गया। लेकिन सर ने बताया कि एक बार अपन डाराटूम लेके देखते इस बार अभी, क्योंकि टिश्यू लगातार आ रहे हैं इसके लिए। लेकिन फर्स्ट डोज डाराटूम लेने के बाद मेरा 4.5 क्रिएटाइन हो गया। उसके बाद लूज मोशन हो चुके, तो 15 days एडमिशन हुआ। क्रिएटाइन धीरे धीरे कवर हो गए, लेकिन नो मेडिसिन। अभी फिलहाल कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच एमएंड के लिए। लेकिन मेरा एक सिंपल एक है कि जब मेडिसिन फर्स्ट लाइन मेडिसिन से कवर हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन मेडिसिन से ही पेशेंट को दिया जाए, और सेकंड लाइन जैसे कि टायराटूम हेवी डोज हेवी मेडिसिन है, उसको सेफ साइड रखा जाए, फ्यूचर में काम आएंगे। प्लस अभी ऐसा हाल है 18 साल की जर्नी में कि माइलोमा के साथ मेरी दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी है कि फर्स्ट वाइफ है और सेकंड माइलोमा है, दोनों को मैं साथ लेके घूमता हूँ, और एट प्रेजेंट फ्री एंड फाइन फर्स्ट क्लास रहता हूँ। मैं केमिस्ट हूँ, 18 कम से कम 16 आवर्स में ड्यूटी करता हूँ, फिट एंड फाइन, मस्त पैकी, कोई इशू नहीं। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ ऑल इज वेल, और मैंने इसके लिए टैटू ही बना दिया, जो जब भी पूछते हैं तो बोलता ऑल इज वेल। तो फिट रहो, फास्ट रहो, और बस ट्रीटमेंट पे फोकस रखो, ट्रीटमेंट लेते रहो और अपना काम में बिजी रहो। जितना आप बिजी रहोगे, ट्रीटमेंट आपसे रिजल्ट अच्छा मिलेगा और माइलोमा दूर भागेगा, तो बेस्ट रहेगा इसमें। तो मेरा एक ही सबको बोलना है, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल इज वेल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, Mr. Mahinder. That's a nice thing to close our session with. Great take-home message. So I would formally then thank everyone for participating in this particular event. So I would thank Dr. Prantha sir, Pankaj Malhotra sir, Tapan sir, Sumit Mir, and Myeloma friends and Yodhas for being part of this. We would meet next week, and as Pankaj sir has just said, next week we are going to cover more on supportive care, wherein we are going to take you through the organ management, so kidney and myeloma, bone and myeloma. So we are going to talk about other things other than myeloma, where it affects the other organ systems in the body, and how you would be able to take care of them better, and how could you prevent the injury or damage to those organs. So catch up with all you people on 27th of March evening at 4 o'clock. So till then, goodbye. Thank you.
Dr. Uday, Yes, Ms. Aditi. I just had a quick question of if we could possibly have a session on cardiac health and myeloma, especially Yeah, that's because what. there So are next treatments. week we are doing that. We are doing the organ systems, wherein we are going to do cardiorenal, bone, and neurology. Okay, all right, great. Because I feel like renal and bone always gets talked about, but cardiac health somehow goes missing in a lot of these sessions. Sure, we'll do that. We'll try to cover that as well. Perfect. Okay, then. See you. Bye-bye. Bye. Pranta sir, can we log out? Yeah, sure. Sir. Thank you, Pranta sir. Thanks for being here. Thank you.